सो हाय एवरीवन। आज कोड फोर्सेस का कॉन्टेस्ट है 903 डिव 3 चालू होने वाला है 11 सेकंड में। वान्या चल जाए बस। ठीक है, हाँ। ठीक है, हाँ। Vanya and Vora are playing a game. Players are given an integer n. On their turn, the player can add 1 to the current integer or subtract it. The player takes turn. Vanya starts. If after Vanya's move the integer is divisible by 3, then he wins. Vanya. If 10 moves have passed and Vanya has not won, then Boa wins. Write a program that based on the integer and determines who will win if both players play optimally. ठीक है. So, on their turn, the player can add 1 to the current integer or subtract it. Okay. The player take turns. Okay. Vanya starts. If after Vanya's moves the integer is divided by 3, if after Vanya's move he wins. Okay. If 10 moves have passed and one is not won, then whoever wins. आपको फाइंड करना है कि क्या होगा. Let's say if it is 1. Okay. So for first without quote if Vanya wins and second without quote if whoever wins. ठीक है. So subtract करा divisible by 3 0 है तो first wins. Okay. Uh, second hmm, so it is like edit 1. Okay. So after 10 moves अगर नहीं जीता वो तो अपना बेस्ट चलने की कोशिश करेगा कि वो ना बने और कुछ ना कुछ चलना पड़ेगा ना. Each player can turn and add 1 to the current or subtract 1. तो जो नहीं हो रहा होगा उसको करने की कोशिश करेगा. तो लेट्स से if n can be 1. Okay, if n is 1, so what you will try to do is 0 कि जिससे divisible हो. कर भी दिया हो कोई बात नहीं. हाँ, ठीक है. फिर रखा बस फाइंड करना है. ठीक है, फर्स्ट में 3. अब निकालना होगा कि क्या है. अगर मान लो 4 है सो यू कैन सब्ट्रैक्ट इट, और अगर मान लो 2 है तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना. कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. Let's say if it is 7, it has to be 6. So 2. Okay. So uh, if it is like n, okay. So let's say if it is 5. So हमें क्या चाहिए कि हम निकाल 2 निकल रहा है. तो अगर मान लो 6 है let's say, तो ठीक है. Any move it reduce that's like, let's say it's 11. Okay. So it is 12. What you will do?
is okay. It makes sense. Okay, ठीक है. Now let's take an example. First, two, three. 5 है तो आंसर फर्स्ट जीता है. फर्स्ट ठीक है. 3 है तो नहीं जीता है. 100 है तो फर्स्ट जीता है. 9 है तो सेकंड जीता है. ओके 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 ठीक है. 3 10 सेकंड फर्स्ट. ओके, मेक सेंस. ओके, let's run it. Let's try it. It. Okay, first, second, first, first, second, first. First, second, first, first, second, first. Copy. Okay. Submit code. Game with integers. Copy. Let's say. Okay. Okay. कितने बी है कितने हैं सब किसी ने नहीं करा ठीक. Okay. 250,000 tons of TNT. Okay. Hmm. So, and one case. Okay. Now, Alex is participating in the filming of another video. We are missed. ठीक है. Mr. Beast लिखना था गलत कर दी थोड़ी सी इनने. Alex is participating in the filming of another video of Mr. Beast, and Mr. Beast asked Alice to prepare to 50,000 tons of TNT, but Alice didn't hear him well, so he prepared N boxes and arranged them in a row waiting for trucks. The ith box from the left weighs AI tons. Now, all trucks that Alex is going to use hold the same number of boxes denoted by K. Loading happens the following way. The first K boxes goes to the first truck, the second K boxes go to the second truck, and the last K boxes go to the N by K trucks. By kth truck. ठीक है. While loading is completed, each truck must have exactly K boxes. In other words, if at some point it's not possible to do exactly K boxes into the truck, then the loading option with the K is not possible. So Alex hates justice, so he wants the maximum absolute difference between the total weight of the two trucks to be as great as possible. Alex has quite a lot of connections, so for he can find a company such that each of its trucks can hold exactly K boxes. So the maximum absolute difference between the two weights of any two trucks. प्रिंट द मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है. ओके ठीक है. फर्स्ट लाइन ऑफ इस टेस्ट केस एन दे रखा है. ठीक है. एन ओके ओके एंड नाउ 2 3 4 5 6 ओके 8 10 11 गारंटीड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है. सो आपको मैंने व्हाट इज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस. ओके. सो फर्स्ट का आंसर मैंने इसका आंसर मैंने जिस इसका मैक्स कौन सा है इसमें से. So okay, solved it. It's a tough thing. Alex is participated in the filming of another video of Mr. Beast. Mr. Beast asked Alex to prepare okay 250,000 of TNT, tons of TNT. 250,000. Thousands, but Alex didn't hear him, so he prepared N boxes. N boxes बनाए and arranged them in a row waiting for trucks. The ith box from the left weight AI. ठीक है, okay. All trucks that Alex is going to use hold the same number of boxes. ठीक है. Denoted by K. Loading happens the following ways. The first K boxes go to the first truck. Okay. Okay. The second K boxes go to the second truck, and the last K boxes go to the N by K trucks. Okay.
Okay, upon loading is complete, each truck must have exactly K boxes. The first K boxes जाने चाहिए this. In other words, if at some point it's not possible to exactly K boxes into the truck, then the loading option will with that K is not possible. ठीक है. Alex said justice, so he wants the maximum absolute difference between the total weight of the two trucks to be as great as possible. Is not possible. Okay, 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 I get it. हमें क्या चाहिए? Maximum absolute difference चाहिए. ठीक है. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8. Okay. So 8 can be divided like 4, 4. You can have 4, 4. Uh, okay. One box, one truck can have like 8. The difference is like maximum. उन्होंने क्या बोला है? Upon loading is completed, each truck must have exactly K boxes. In other words, if at some point it is not possible to load exactly K boxes into the truck, okay, equally आप divide कर पाओ. ठीक है, n तक जा सकता है. So here we can see एक दो तीन चार पाँच छः, तो दो दो ट्रक डाल सकते हैं, तो it can have like 16 and it can have like 3. 13 people have done. ठीक है. The LA is going to hold the truck denoted by K. The first K boxes go to the first truck. The second K boxes go to the second truck. The last K boxes go to the N by K truck. ठीक है. Upon loading is completed, each truck must have exactly K boxes. ठीक है. Not possible. ठीक है. Alex hates justice. So he wants a maximum absolute difference between the total weights of two trucks to be had, or two trucks to be as great as possible. Two total weight of two trucks. Alice has quite a lot of connections, so find a company such that each of its trucks can hold exactly K boxes. Each of जितने भी trucks है उसके वो hold कर पाए. First K boxes, okay, ठीक है. Maximum absolute difference between total weight of any two trucks, ठीक है. Maximum absolute difference between any two, ठीक है. The first line contains any two trucks. Absolute difference, ठीक है. So it's like if it is 12, it's 4, it's 9, it's 8. First two boxes. But if first three boxes, it can't be. So how it is calculated? First key boxes, na? Okay. Okay, okay. The third case, the truck will be the same total weight of box. So the answer is सेम ही रहेगा, तो कुछ नहीं कर सकते, इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, आई गेट इट. सो आप क्या करो, आप इसको क्या करो कि ऐसे है. आप आप इसका मिनिमम निकालो, इसका मैक्सिमम निकालो. उसके बाद आपने दो ऐड कर दी, वैसे आप काउंट कर सकते हो. एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है ना वैसे. ओके.
एनी वर्क्स थोड़ा ले सकते हो। 15 है। सो टाइम ज़्यादा हो गया। तो यार ये अच्छा क्वेश्चन है। अलग अलग डिविजन्स करके आप निकाल सकते हो, पर इट्स लाइक ओके, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है। तो अगर हम दो दो का लेते हैं तो ये दो कुछ बनेगा, ये दो कुछ बनेगा, ये दो कुछ बनेगा एंड ये दो कुछ बनेगा, एंड देन वी कैलकुलेट ओके मैक्स। So we can do that for every this. We can find the summations. Summation total कैलकुलेट करने का इजी तरीका है क्या? देखो देखो, हम वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, ऐसे करते हैं। Okay, we can have prefix sums, and what we can do is we can have like we can find what are the prime numbers which equally divides it, those which equally divides it, like 4 4 4, 5 5 5, and you just find the divisible numbers यूजिंग फाइनल डिविजिबल नंबर। सो उसके अलावा क्या कर सकते हैं, द प्रीफिक्स सम से हर में चेक कर सकते हैं मैक्सिमम क्या होता है। सो नाउ n इज 10 की पावर 0 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 है, ठीक है। और आपके पास जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, डिवाइजर्स, डिवाइजर्स कैन बी वेरी हाई। अगर मान लो रूट के हिसाब से विल इट एक्सीड, इट मे एक्सीड, इट मे नॉट एक्सीड। ओके, वी कैन ट्राई दैट। Is this the approach or there is a better approach to solve this? And sort it up. I think sorting थोड़ा कर सकते हैं। First game versus go to the yeah. First K boxes, second K boxes. कोई भी K boxes हो सकते हैं, तो क्या there's a specific way to put it. I think there's a specific way to put it. For every, just find the max and the min, and then find the absolute difference out of it. Okay, हाँ ठीक है, it makes sense. Let's do it. Don't know if it is correct or not. Let's try it. I don't know why this question was थोड़ा ठीक question है. Uh, then ठीक ठीक है. अब रुक जाओ. हाँ, A can be anything, N can be anything. Divisors of N निकालना है ना. टाइम कितना दिया है, 2 सेकेंड्स दिया ना, हाँ ठीक है. डिवाइसेस कर लेते हैं.
You can't have like A has to be at least one. Why you didn't use all it? ऐसे all नहीं कर सकते. Yasin Yarek recently found an array of n elements. Become very interested in finding the maximum sum. यार मेरे को वो आ क्यों नहीं? I am not getting it. Is there a direct way of sorting it and doing it? क्या sorting करने के कर है क्या? It's अगर इसे sorted करके है, let's say 10, 6, 3, 3, 2, 1. It is like that. Okay, nice. We add this 16. It's giving big answer. So that's not the logic. Ah, let's do it. Uh, अब क्या करो कि देयर कैन बी मैनी ना, जैसे 2 से अगर 8 था तो 4 भी हो सकता है. तो बहुत वेज है जिसमें डिवाइड हो सकता है ऐसे देखा जाए तो. और n नहीं हो सकता ना. 1 2 3 ऐसे बहुत प्राइम नंबर्स में इंपॉर्टेंट है क्या? जैसे 4 8 है, 2 2 2 में कर लिया, तो 4 में भी तो कर सकते हो. ओके, लेट्स ट्राई सी what I'm not getting. Yeah, Yari recently found an array or A of n elements and become very interested in finding the maximum sum of non-empty subarrays. How to find the divisors? Let's try it that basic vector is created. और यहाँ पे भी दोबारा से 6 ऐड हो रहा है और यहाँ पे काउंट प्लस It is clear. इक्वल टू 2 हो रहा है, तो इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं हम? तो I can guarantee you that I can save you up to 2 hours of your time on daily basis, no matter in which वो भी डिवाइड. एंड एक और तरीका है, जो आई लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन है ना, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन. तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन. तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? इफ एन मॉड्यूलो आई. ठीक है, let's do that. हाँ,
if n divided by I is equals to 0, I 1 है, ठीक है, कर दिया। अब एरर चलाते हैं, ठीक 0, ठीक है। So for every index, what you can do is just find the sums, and how to find the an absolute difference between the sum of any between any two sums. Now you just find the max and min of makes sense. min मत करो, min क्या होना चाहिए? हमें मिनिमम सम फाइंड करना है, मैक्सिमम सम फाइंड करना है। For every I, what you will do, I हमें बताए कितने साइज में करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाँ हाँ, हम क्या करेंगे कि पहले ऐड करा, मैक्स में ऐड कर देंगे, सम ऐड करना है ना फर्स्ट। तो अगर मान लो 2 है, ठीक है, सो हम क्या करेंगे, टाइम तो पहुंच गया है, काउंट काउंट वेरिएबल बना, काउंट टू ए है। आप तो क्या करोगे, काउंट इक्वल्स टू ए आ गया, मान लो काउंट 2 हो गया, क्या सिंपली क्या करेंगे, सम इज इक्वल क्या करेंगे, इफ सम if sum like and count plus plus count is equals to 0 is equals to 3, आप क्या करोगे, max of x ये आप करोगे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि लॉन्ग मिन स्टोर करने के लिए क्या कर सकते हो, इक्वल्स टू मिन, मैंने यहाँ ऐड कर दिया, क्या कर सकते हैं, ठीक है, फिर ठीक है, मेक सेंस। अब ठीक है, हम मैक्स निकालना है, मिन निकालना है, ठीक है, जब भी काउंट ए हो जाए, ठीक है, तो 0 हो गया। अब उसके बाद मैक्स फाइंड कर लिया, मिन फाइंड कर लिया, अब हाँ
try it. ट्राई करते हैं क्या है बी प्रॉब्लम है ना see what it gets you 0 14 0 318 536 and 210185. Okay, first it is giving you 0 210 submissions can be very large, but you can have any. I think this could have worked. I think this contest. ठीक है. Means like this. Fine answer. ठीक है. Try this. 18911 we get it. आ गया हमारा आंसर. अब ट्राई 121 करो. Status. Okay, let's try it. Let's try it. People have done. Not much people have done. Third problem 2000 people and बाकी तो नहीं. ठीक है. Wrong answer of test 2. गलत आ गया. I don't know where it is failing. Uh, I fucked यार. गलत जो आ रहा है ना ये बहुत ही बेकार चीज. आप पता कैसे लगाए कि आंसर करना कैसे है? ये ज्यादा लोगों ने करा भी नहीं वैसे देखा जाए. सी प्रॉब्लम ट्राई करते हैं. ठीक है. Yeah, Yarik recently found an array of n elements and become very interested in finding the maximum sum of. Okay. Yarik recently found an array A of n elements, become very interested in finding the maximum sum of a non-empty subarray.
Whoever hearing doesn't like consecutive integers with the same parity, so the subarray he chooses must have alternating parities of adjacent elements. For example, 1 to 3 is acceptable, but 1 to 4 is not, as 2 and 4 are both even and adjacent. Okay, same parity नहीं होना चाहिए. Here need to find when finding the maximum sum of such a subarray. Okay, same parity नहीं होना चाहिए, same even odd चाहिए sum. Here need to find maximum sum of the subarray. Okay. Uh, 1 second है. I think this can be the reason. This can be the reason, I think. Let's try again. The problem, copy, paste. I think this is the reason. Sort of. Let's try again. I hope so. It works now. Doesn't we will see. Okay, how many people have solved it? Not much. आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से फाइंड करना है मैक्सिमम सवेरे जिस तरीके से जो एडजस्टेंट एलिमेंट्स है वो ना हो. सही. You find the maximum sum of such a subarray. Alternating parities होनी चाहिए, ठीक है. So it's like 1 2 3 4 5. So it has to be like, okay, should have alternate parities. Same parities नहीं होनी चाहिए. Okay. So how you can get the maximum subarray? I think it's easy. But accepted. चलो ये भी हो गया, बी प्रॉब्लम भी हो गया. यार इसमें यार इजी क्वेश्चन था, मैंने टाइम इसलिए ले लिया कि यार आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो यार मैं तो ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा, इसलिए हो रहा है. बट ठीक है, कर लिया हमने सॉल्व. और लॉजिक सिंपल था इसके अंदर. आपको बस क्या करना था कि सारे फैक्टर्स फाइंड करने थे और फिर बस आइटरेट करके चेक करना था. एक हमारा एच केस रह गया था. और थर्ड प्रॉब्लम देखते क्या है. ये रहा. You recently found an array of n elements and become very interested in finding maximum sum of a non-empty subarray. आपको maximum sum find करना है इन सब चीजों का, ठीक है. कुछ भी हो सकता है. ओके फाइन. आपकी जो मिन वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर सारे नेगेटिव है, लेट्स अज्यूम सारे नेगेटिव है, तो उन सब में जो सबसे छोटा नेगेटिव है आप उसको ले लोगे, ठीक है. अदरवाइज आप क्या करोगे. 1 2 3, तो जैसे इट्स लाइक लेट्स से इफ इट इज -1 और इट्स इवन 3. व्हाई यू टेक -1? स्किप्स 4. ओके, नाउ 3. This reduces it. So the question is, will you take it or not take it? Because it doesn't reduce it to 0. So it's like it's 3, 0, 5, 3, 8. You get it, 8. Okay, it makes more sense now. So how to find the maximum subarray out of it? Let's think. How to find the maximum subarray, and we have to make sure that this doesn't happens. रेंज क्या दे रखी है, 10⁵ दे रखी है, देखो स्टैंडर्ड है, और 10⁻³ से लेके 10⁻+3 है, मतलब इतना हाई नहीं है. तो इसका कुछ है क्या लॉजिक, मतलब होने का. अगर हमें इसको लेना है तो हम कैसे लें, कैसे गारंटीड करें कि हाँ हाँ शुड टेक इट और नॉट टेक इट.
because it should be not, और तो आना ही चाहिए. ओ नहीं, पर 10 के बाद 3 तक है ना, 10 के बाद 5 थोड़ी ना. So what you can do is, let's think क्या कर सकते हो. देखो, आप क्या कर सकते हो कि आपको ट्राई करना है कि यार जो ये सब एरे दे रखा है, फर्स्टली ऑल्टरनेट हो चीजें. अगर ऑल्टरनेट नहीं है तो आप वहीं पर स्टॉप हो जाओगे और दिस इज द मैक्सिमम थिंग यू कैन गेट. अदरवाइज यू कैन एक्सटेंड थिंग्स. अब इसको इंक्लूड करने का कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है. व्हाट यू विल डू इज लाइक यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. Let's see this. You start from here. See that it's odd. Okay, fine. But it's negative. So taking negative doesn't benefits you at all. You just skips it. Comes to here even or positive. 2 हुआ, 6 हुआ. It's contradictory to okay 2. Let's come here. 4. So it's maximum 40k. Let's try this. 101. Odd. You find odd. Okay. So हमने बैक स्टोर कर लिया. कान को फर्दर नेगेटिव आगे चलो. ठीक है. Here if you calculate -10, 8, 5 है. -8 which is +3, don't need 5 स्टोर कर लिया अपने पास. 10 रन ले सकते हैं. ओके, आई गॉट इट. इट्स इजी. सिंपल. ट्रैवर्स करना है बस. दुनिया है इजी है. मैक्सिमम यू कैन have. ठीक है. इट मेक सेंस. व्हाट इट सॉरी 0, and you just do storing the maximum sum and initial sum is gone. Now, if and अगर ऐसा है ठीक है. नाउ
ठीक है, एरे फाइंड कर दिया, चेक करेंगे एल्स start is equals to strike 0, so what we can and ये कुछ ऐड तो करा नहीं, else बात करें। इट्स डिपेंड्स ऑन ऑल्टरनेटिव वेज ना, ऑल्टरनेटिव वेज कि करंटली क्या है और आपको चाहिए क्या, ठीक है। स्टार्ट इज इक्वल्स टू यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, given is true, it's the problem, ठीक है। हाँ, सो करंट एंड जो है वो बेसिकली पिछले वाले से तो होना चाहिए, बस करने की जरूरत नहीं थी। आप क्या कर सकते हैं कि आप बस ये चेक कर गिवन की जरूरत है, पिछले वाले मुझे कोई भी आप ऐड पे आते हो, ठीक है, और आप पिक करना चाहते हो तो आपको कुछ चेक करना पड़ेगा पिछला के, ठीक है, else and दो ही केस में आप ऐड कर सकते हो, else अगर मान लो E1 है, सो व्हाट यू विल डू, can't do anything about it, ठीक है, सो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, हाँ, तभी आप करना, मैंने मैक्स फाइंड करना है, तो अवेयर पॉसिबल ही नहीं है कि सबमिशन भी करना, हाँ, तभी करना, अगर लेसर है तो कुछ मत करना, जब तक अगर आपको पॉजिटिव मिलना होता तो आपको मिल जाता पॉजिटिव, क्योंकि आपने मैक्स फाइंड करने की कोशिश की, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता कहाँ मिलता, एटलीस्ट जीरो तो मिलता है ना, सो दिस इज द केस वेयर एंड इट इज आल्सो फाइन, दिस इज द केस फाइन, एल्स केस में आप क्या करोगे कि बात तो जीरो कर दो एंड करंट एंड पे आ जाओ और बस एंड पे आ जाओ, बस ये डिविजिबल नहीं हो रहा पर इसको इंक्लूड करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसे नहीं बढ़ेंगे, एल्स लेस देन जीरो आ
सो आप क्या करोगे कि नाउ, ठीक है, नाउ एंड ओके, तो मैं 0, ठीक है, नाउ व्हाट विल डू, और ठीक है, ठीक है, नाउ आई थिंक इट्स डन, राइट। ओके, 3 5 4 right 11 12 13 14 15, ठीक है, let's try this, 10, okay, do is try everything, copy, extract, 15 17 4 15 17 5 बचे, 5 आ रहा, 4 minus 1000 0 8 2 5 तीसरे पे, ये 5, okay, okay, if we are getting submission higher, then we can do it. If at negative, then there is a problem. So like it's less than 0, is less, but is there any problem with it? अगर आंसर मान लो, many people have solved it. Okay, 3000 people have solved it. I should also solve. Hmm, let's think. Unless it is positive, I think there is no problem. Okay, so yeah, so ये वाला तो केस है, बाकी तो it works fine. हाँ, so let's check. दोनों में से केस है, तभी हम बात करेंगे. ठीक है, हाँ ना, it less than 0. So now that's the case that we can talk about. That's the case. Now plus 12 0 है, then fine. Else same thing. So, okay, okay, yeah. Same cheese.
17, 13, 8, 13. इंगा मैं सम को जीरो नहीं कराऊंगा. ओके प्रॉब्लम का है. गेट इट. 13 कैसे? गड़बड़ का है यार. मिस्टेक. I don't get it. And zero है अगर. Where is the problem? बस. Okay. हाँ.
फर्स्ट। ओ एरे ऑफ एंड करना है ना प्लस एरे ऑफ एंड करना है ना प्लस। ठीक है आई थिंक वी गॉट इट। 8 मिनट। ये इस बार का कॉन्टेस्ट का यार ऐसा है कि बहुत ऐसी गड़बड़ी हो गई छोटी छोटी यार, बहुत जल्दी कर सकता था मैं सॉल्व। फालतू गड़बड़ियों की वजह से कट गए यार, बुरा लग रहा है अब तो। ठीक है जैसा भी कॉन्टेस्ट जा रहा है दो अभी तो। 3 17 8 4 3 17 8 4 4 minus 1000 101 and 10 ठीक है let's try it hopefully it's correct uh, submit इतने लोगों ने सवाल कर let's try it fourth question कितने लगे 2000 लगे now Eric recently found an area of elements become very interested by the maximum someone non-empty subarray. However, Eric doesn't like consecutive integers with the same parity, so the subarray he chooses may. Okay, we have done this already. Let's try the wrong answer in test 2. क्या प्रॉब्लम आ गई? हाँ लेट्स थिंक लॉन्ग आंसर क्या आपने निकाला कि लेट्स डू इट इफ आंसर जो है आपका मैक्स है ना मैक्स निकाला था आपने प्राइस को 0 सम से कह रहे हो ठीक है मैं निकाला इफ आंसर इज लेस देन 0 क्या बोलते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम होगा एंड now fine and now while start less than equals to end and end less than end if start is equals to end ठीक है तो अगर array of end greater than 0 है sum is equals to sum plus array of end which will be nothing and end plus plus now else आप क्या करोगे अगर less than equals to 0 है तो start plus plus and end plus ठीक है ये start end के बराबर else array of end is greater than equals to 0 so it's like okay array of n minus 1 divided by 2 is not equal to 0 and array of this is equal to 0 sum plus array of n करेंगे और n plus plus करेंगे otherwise ऐसा नहीं है मतलब सेम पैरिटी है सो आप क्या करोगे स्टार्ट को एंड वाला सम को 0 कर दो ठीक है नाउ एल्स आप क्या करोगे इफ array of n minus 1 ये ग्रेटर देन 0 है ओ सॉरी यहाँ पे सम प्लस array of n होना चाहिए यहाँ पर हाँ अब सही लेट्स ट्राई वंस अगेन कॉपी इट यार इतनी मिस्टेक तो अब हद हो गई है यार क्या कर रहा हूँ मैं आज 3 17 8 माइनस 4 माइनस 1000 अब यार वापस से ना हो यार फालतू की गड़बड़ी हो रही है माथा खराब
फुल इट वर्क्स 2000 लोग ट्राई करते हैं और बाकी 1000 क्यों शॉट नहीं हुआ ये ट्राई करते हैं. Yarrick is a big fan of many kinds of music, but Yarrick loves not only listening to music but also writing it. So he likes electronic music most of all. So he has created his own system of music notes, which is in his opinion is best for it. Okay. So Yarrick also like informatics in his system notes. Accepted ना चलो ये भी हो. मतलब मैं बहुत जल्दी कर सकता था ये क्वेश्चंस 30 मिनट्स में. आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और उसके अलावा सही बताओ इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है कई बार. और पता नहीं यार आज का दिन खराब सा है. अभी फोर्थ प्रॉब्लम ट्राई करते हैं. फोर्थ प्रॉब्लम हो जाए बेटर है. एक बार चेक कर लेते हैं सही तो चल रहा है. हाँ सही चल रहा है. आवाज भी आ रही होगी. हेलो हेलो. हाँ. तो अब ट्राई करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम. ट्राई करेंगे ये बन जाए. ये अगर बन जाएगा तो थोड़ा सा सही डायरेक्शन में आ जाएंगे. वरना रेटिंग देखो बहुत खराब आने वाला है स्कोर इस बार. मान के चलो. यारिक एंड म्यूजिकल नोट्स ठीक है. Yarrick is a big fan of music, but Yarrick loves not only listening to music but also writing it. He like electronic music most of all. Okay. Since Yarrick also like informatics, in his system notes are denoted by integers of 2 की power k, where k greater than equals to 1 of positive integers. ठीक है. But as you know, you can't use just notes to write music. So Yarrick uses combination of two notes. The combination of two notes a and k b, where a is 2 की power k and b is 2 की power l. He denotes by the integer a की power v. He denotes by okay. For example, if a is 8. ठीक है. B is 4. And the combination a comma b is denoted as an integer a की power b. ठीक है. Note that the different combinations can have same notation. For example, the combination 64-2 can also be denoted by the integer 4096 or 64 square. Okay. Garrick has already chosen n notes that he wants to use in his melody. However, since these integers can be very large, he has written them down as an array of length and then the note I has bi is equals to 2 की power ai. The integer ai can be repeated. The melody will consist of several combinations of two notes. Garrick was wondering how many pairs of notes bi and bj exists such that the combination bi and bj is equal to the combination bj bi. In other words, if he wants to count the number of pairs, bi की power bj is equals to bj की power bi. Help him find the number of pairs in such a way. Okay. Uh, Next line of n integers है an array ak guaranteed. Okay. Output the pairs that satisfy the following condition. One more question. You already have chosen n nodes. But as you know, you can't use just nodes to write music. So Yarrick use combination of two nodes. ठीक है. दो नोट का कॉम्बिनेशन बनाता है. कॉम्बिनेशन टू नोट्स ए बी. ठीक है. The combination a b is denoted by this. Note that the different combination can have same notation. Okay. So Yarrick has chosen n nodes that he wanted to use in his melody. However, since these integers can be very large, he has written them down as an array a of length n. Then the note I is bi is equals to 2 की power ai. अच्छा 2 की power है. Integers in array a can be repeated. ओके तो हमें फाइंड करना है कि कितने पेयर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट करते हैं बी आई बी जे सच दैट बी आई बी जे इज इक्वल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बी जे बी आई मतलब बी आई की पावर बी जे एंड बी जे की पावर बी आई सेम हो. इन अदर वर्ड्स ही वांट्स टू काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स सच दैट बी आई की पावर बी जे इज इक्वल टू बी जे की पावर बी आई. 2 की पावर 4 4 की पावर 2 लाइक दैट एंड हेल्प हिम फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स. ओके. आपको एरे दे रखा है. इसका आपको यूज करना है. आई थिंक दिस लुक्स सिंपलर. ओके. करा है लोगों ने. करा है 2500 लोगों ने करा है. सवाल और 1800 लोगों ने. ये डीप प्रॉब्लम तो करना पड़ेगा क्योंकि फिर रैंक अच्छी नहीं आएगी. और रॉन्ग आंसर्स कर दिए ना मैंने. एक तो यार ये रॉन्ग आंसर्स का भी बहुत बेकार चीज़ है यार. ये दो में रॉन्ग आंसर करके फालतू खराब कर दिया है यार. बट अभी करना पड़ेगा सॉल्व.
वापस समझते क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। Yarek also like informatics in the system nodes are denoted by integers, ठीक है. But as you know, you can't use just nodes to write music. So Yarek use combination of two nodes, ठीक है. दो नोड का combination चाहिए. Combination of two nodes a comma b, where a is equals to 2 की power k and b is equals to 2 की power n. So he denotes by the integer denotes a की power b. ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो a और b होगा वो 2 की पावर का होगा. हाँ ठीक है. For example, if a is 2, 8, we can write it as like 2 cube. b को हम लिख सकते हैं ऐसे. Then the combination a comma b is denoted by the integer a की power b, which is 8 की power which is 4096. Note that different combinations can have same notation. The combination 64 comma 2 is also denoted by the integer 4096, which is equals to 64 का square. So okay, denoted by the integer. Okay. Yorick has already chosen n notes that he wants to use in his melody. तो Yorick को n notes चाहिए chosen. However, since their integer can be very large, he has written them down as an array A. तो आपको उसको जो notes चाहिए थे ना, array A of length n, then the note I जो है वो 2 की पावर A. अच्छा, तो हर नोट जो है वो 2 की पावर A है. इंटीजर इन array A can be repeated. Okay. इंटीजर in array A repeated भी हो सकते हैं. Okay. So melody will consist of several combination of two notes. Okay. So Yarrick was wondering how many pairs of bi and bj exist such that the combination this is equal to the combination this. In other words, he wants to count the number of pairs I comma j such that bi power bj is equals to bj की power bi. Help him find the number of each pairs. Okay, ठीक, get it. Uh, let's take an example and then see. थोड़ा बहुत समझ आया, इतना भी clear नहीं हुआ. थोड़ा समझते हैं क्या कहना चाहिए. क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 2 की पावर just let's say example, तीसरा एग्जांपल देखते हैं. 1 2. ओके. 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 and 2 की पावर 2, which is 8 2 8 4. ठीक है. अब हमें क्या बोला गया है कि हमें ऐसा आई जे चाहिए सच दैट कॉम्बिनेशन दिस इज इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन दिस. और जब हम इसकी बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि सो 8 की पावर 2, 2 की पावर 4 and 4 की पावर 2. This is the only combination you can have. And we know that everyone will be the power of. ठीक है, it makes sense. आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने. ओके, नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड करने. सो व्हाट इज द लॉजिक. हमें बोला 2 की पावर 4, 2 की पावर स्क्वायर, 2 स्क्वायर की पावर 2. तो
it makes sense. What is the pattern? Let's take some these. Let's take this example. So, like if it is same now, one pair, two pair, and three pair, you can get it. Oh, okay, you get it. Four pairs, और n क्या दे रखा है आपको 10 की पावर 5 दे रखा है ओके थोड़ा बहुत समझ आ रहा है everyone is like multiple of something so to get maximum out of it uh, why it got worked because let's say if it is 2 की power 3 it's 2 2 की power 3 and it's 2 की power square हमने जब इसकी पावर करी इसकी पावर और इसका मल्टीप्लिकेशन सेम था तो अगर दो ऐसे एलिमेंट है जिसमें इसकी पावर और इसका मल्टीप्लिकेशन एंड इसकी पावर और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर सेम है तो यू गेट द पेयर ओके मेक सेंस सो कैन वी हियर क्या होगा देखो 19 पेयर्स बनेंगे ना दिस इज 2,4 और जितने भी 4 है वो बनेंगे सो if you find the number of it if you find the number और इसकी पावर उसको मल्टीप्लाई करा के और तो what you can do is for every pair we see what is the number and we find a pair same thing है ना and we find the pair which has same for every number we can't do that ना अब हर नंबर के लिए आप काउंट कैसे करोगे जैसे you can't change the or you can okay it's same ना यार आप कैसे भी कर दो इनको करो ना करो फर्क पड़ता है क्या आई थिंक यू शुड सॉर्ट इट सॉर्ट करने से क्या होगा करते हैं वन 2 4 1 6 2 8 5 4 2 10 8 7 4 3 2 6 10 तो 1 फिर 2 आया एक और 2 आया एक और 2 3 3 4 4 4 5 6 1 2 7 8 3 10 ठीक है
नाउ हमें क्या करना है कि हमने ये फाइंड कर लिया पहले, और फिर उन सब के नंबर्स निकाले। फिर हमने चेक करा यार ये नंबर्स भी उसी लेवल पे सॉर्ट होंगे, यार इसकी पावर जो है और मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है ना, जैसे अब इट्स लाइक 2 4 4 4 4 8 16 16 16 32 32 64 64 128 256 512 512 let's say. So we can find that यार इसका मल्टीप्लाई करने पर we can count it, ऐसे काउंट कर सकते हैं, है ना? अगर सेम है तो ऑब्वियसली इट विल एग्जिस्ट, अदरवाइज क्या होना चाहिए कि तो वी कैन फाइंड द पेयर्स, ठीक है, समझ आ रहा है थोड़ा बहुत क्वेश्चन, बट फाइंड कैसे करेंगे ये होने का? एक तो यार इस बार सेकंड थ्रेड भी दे रहा है, इस बार तो 3000 इन्होंने कर दिया। ए यार स्टैंडिंग्स देखो इसमें क्या स्टैंडिंग, मैं तो जल्दी कर ही दे यार, मैं भी कर देता है यार, पता नहीं फालतू में मिस्टेक्स कर दी, डी प्रॉब्लम भी कर दिया ना, ठीक है, डी प्रॉब्लम करना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। ओके, वी गॉट समथिंग, लेट्स थिंक इन डिफरेंट वे कि आपका जो नंबर निकला है इज इट गारंटीड? अगर मेरा मल्टीप्लिकेशन पावर की आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 तो ऐसे ही होगा। इट इज नॉट ऑल द केस बिकॉज इसका मल्टीप्लिकेशन इट्स लाइक अगर हमने करा 4 की पावर 16 16 की पावर we get the same thing।
अच्छा, तो इट्स ओनली वन केस ना जिसमें हो सकता है, अदरवाइज इक्वल हो ही नहीं सकता। एक ही केस है जिसमें इक्वल हो सकता है, विच इज 2 और 4 वाला केस, बाकी सब में इक्वल हो ही नहीं सकता पावर्स। सो अगर सेम होगा तो ही आंसर होगा। हाँ, आई थिंक सो दिस इज द आंसर। तो यार मैं ये सोच रहा हूँ कि एक वाला केस ये जो थोड़ा डिफरेंट केस है, वरना अदरवाइज बाकी थोड़ा अलग होगा बाकी। आप क्या करो कि बस काउंट कर लो कि कितने सेम्स हैं। लेट्स से यार 19 आंसर है ना, लेट्स से कैसा आ रहा 19। तो यार 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 तो हो गए, प्लस बाकी 10 देखना है। अ, 1 2 कितने बन गए पेयर्स? 9 प्लस 1 और 2 11 प्लस 12 13 14 15। सेम कितने हैं? 3 है। 2 पेयर बनेंगे, 3 पेयर बन सकते हैं ना, सॉरी। तो जितने हैं उतने पेयर बनेंगे क्या? 3 पेयर बनेंगे ना? तो कैसे निकलता है? 3 पेयर, सो 1 2 3 4 4। ओके, आई गेट इट। सो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 2 पेयर, 1 पेयर, 2 4 5 6 7 8 9 10। 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 1 2 3 4 5। छः और 3। ठीक, आई गेट इट। रूट 1 और 2 को साथ में इंक्लूड कर लो। गेट इट। कितने जनों ने कर लिया? अभी देखो डी प्रॉब्लम। अभी भी यार यही है ना, ये भी इजी प्रॉब्लम है। वही है, टाइम वही हो जाता है, शुरुआत में गड़बड़ हो जाती है तो फिर वो गड़बड़ हो ही जाती है, ठीक करना पड़ता है, फिर वो ठीक होते होते लग ही जाते हैं अपने। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, एरे दे रखा है। ओके,
ठीक है। हाँ हाँ, तीन चीज। ठीक है। हाँ हाँ, थ्री पेयर्स बस थ्री। ठीक है, तीन के पास कितने थे? थ्री पेयर्स। ठीक, हाउ यू कैन काउंट इट? इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। टू होता है क्या? n+2 तो नहीं होता, तो होता क्या है? हाँ, बराबर। 6। हाँ, 10। ठीक है, 10 आ रहा है ना? हाँ, तीन है। ठीक है, ओके, गेट इट। हाँ, कुछ वो है क्या? मॉडुलो वॉडुलो का कुछ सीन? मॉडुलो का सीन नहीं है ना? तो ठीक है, होंगे बाकी तो। एंड आंसर कॉपी 01630। इनपुट तो दिया ही नहीं।
ठीक है, 0 2 1 3 19 19, ठीक है, होपफुली कुछ गड़बड़ ना करियो। ठीक है, स्टेटस की प्रॉब्लम, ठीक है, होपफुली इट वर्क्स, इट डजंट, लेट्स सी ये प्रॉब्लम कितने एक्सेप्टेड। चलो 4 प्रॉब्लम कर लिए, बहुत जल्दी कर सकता था 30-35 मिनट्स में, बट यार जस्ट गोज अगेंस्ट। समटाइम चीजें नहीं चलती यार, क्या करें, स्टैंडिंग्स क्या है। सो अच्छा, जी प्रॉब्लम कर दिया कोड धनराज ने। इजी क्या है ये देखो, इजी तो क्यू शॉर्ट ही है, क्यू शॉर्ट करते हैं फिर। Let found an array of n integers and decide to sort it. Okay. To do this, let can apply the following operation any number of times. Extract the first element of the array and insert it at the end. Okay. Uh, let found an array. To this, let can apply the following operations. देखो यार 4 प्रॉब्लम कर लिए, बहुत जल्दी हो जानी चाहिए थे, 1 hour 40 minutes बहुत ज्यादा है। एटलीस्ट 1 hour के अंदर हो जाना चाहिए था। आज मेरी परफॉर्मेंस खराब थी बिकॉज थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई और मेरी तबियत भी थोड़ी खराब है। बट उसके अलावा यार मतलब कॉन्टेस्ट ठीक है, मतलब टफ भी नहीं है और बहुत सिंपल भी नहीं है डिव 3 के हिसाब से। आई थिंक सो, पता नहीं। उसके अलावा चार्ज चार्ज लगा के रखते हैं, चार्ज, हाँ ठीक है। ट्राई करते हैं यार, ये ई प्रॉब्लम हो जाए तो बढ़िया है। ई नहीं होती तो फिर जी करा है इसने। जी आसान है शायद से, पता नहीं जी कैसे कर लिया। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, टू दिस लेट कैन अप्लाई द फॉलोइंग ऑपरेशंस एन नंबर ऑफ टाइम। एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे एंड इंसर्ट इट एट द एंड। ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे लेना है और उसको एंड में इंसर्ट कर देना है। ठीक है, एंड में इंसर्ट। स्वैप द एलिमेंट विद द प्रीवियस वन until it becomes the first or until it becomes strictly greater than the previous one. First or until it becomes strictly greater than the previous one. Okay. Let doesn't have time to perform all the operations, so it asks you to determine the minimum operations required to sort the array or report that it is uh, impossible. Okay. हमेशा फर्स्ट एलिमेंट लो और इसको आप पीछे करते जाओ। Okay. So when it is not possible, let's see. It is not possible because let's say if you go back, okay, okay, when max element goes back, uh, it should make it short if it is not done. Makes sense. Okay. फर्स्ट एलिमेंट को लो, पीछे लेके जाओ और उसके बाद उसको सॉर्ट। Why it can't be? Let's say if it is 5242, so it will go back. It will go back until it's like strictly greater, greater or equal. Strictly greater, yeah. Strictly greater than the previous one. तो अगर आपके पास इक्वल एलिमेंट्स है
और आप सॉर्टेड नहीं हो, which I think can also work if it is like, then it works. Then we can not have. Makes sense. G problem, क्या G problem easy है? ठीक है, 3,900 जनों ने कर लिया यार क्यू सॉर्ट वाला। तो इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर रहे हैं? कोई हाई लेवल लोग दे रहे हैं क्या इस बार? देख तो ये कौन कौन दे रहा है। ये बहुत जल्दी सॉल्व कर रहा है। अगर इसको ढंग से ऑब्जर्व करें तो क्या हो रहा है, हर बार पीछे जा रहा है और वो ट्राई कर रहा है कि वो जाए, तो रुक जाए जब उससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर मिले। तो अगर कुछ भी एलिमेंट्स हो रैंडम, तो इट विल ऑलवेज वर्क इफ दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स। सो इफ दे आर ऑल डिफरेंट इट विल ऑलवेज वर्क्स। हमें क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी निकालने हैं। कितने लगेंगे? why it is, see, okay, sense. और when it is not possible, ठीक है, मैंने एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड कर लो, कब पॉसिबल नहीं ये निकालना पड़ेगा हमें। इन तो ये कब पॉसिबल नहीं है। जैसे ये केस था, इसमें अगर मान लो 2245 होता, अब क्या बोला है। Okay, got it. But this always a case, or they can be
ओके, सो इसके बाद एलिमेंट सॉर्ट होने चाहिए। अच्छा, अगर इसके एलिमेंट के पास सॉर्टेड नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक तो यही है। तो लेट्स ट्राई। आई थिंक मेरे को लॉजिक मिल गया है, ट्राई करते हैं इसको। यही है। फर्स्टली फाइंड द मिनिमम रेंज का कर रहा है। ठीक है, पहले तो मिन इंडेक्स फाइंड करो क्या है। Definitely. How many time? One, one, okay. How many time it takes to come here? It is not even possible. First index. So, अगर लेसर हो तभी करो। ठीक है। हाँ, एग्जाम मिल गया आपको। से 2 3 2 1 तो पहले बूलियन चेक लगा के। ठीक है। हाँ, तो ठीक है। हाँ, जो भी इंडेक्स है आपका।
तो अगर वहाँ 0th इंडेक्स पर आप 1 पे हो तो जो आपका इंडेक्स है वही आपका आंसर है ना। इफ चेक है। और 3 एलिमेंट्स है। और यहाँ कॉपी 2 6 -1 -1 0। Okay, let's try to submit it. Let's see if it works or not. मेरे पास सही है। I hope so it works. टफ तो नहीं है। ओके, so it's done. ओके, ज़्यादा टाइम लग गया। I could have done better। यार बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा यार, 5 ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया है। 6th प्रॉब्लम F करते हैं ट्राई। F कम लोगों ने करा है। कुछ ग्राफ से रिलेटेड लग रहा है मुझे तो। ग्राफ इतना आता नहीं है। जी अनयूजुअल ट्रीटमेंट ट्री इज कनेक्टेड, अगर ग्राफ के प्रॉब्लम है दोनों। लेट्स इसको ट्राई करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं मुझे ग्राफ में, बस ग्राफ का यार थोड़ा सा सीन खराब है। एक तो क्या हुआ, tree is connected graph without cycles. It can be shown in any tree of n verticals. जो किस धनंजय ने तो सारे कर दिए होंगे मेरे। जी कर दिया है, ई कर दिया है, एफ पे नहीं आ पा रहा। ठीक है, मतलब इतना भी बुरा राउंड नहीं गया मेरा। ये रॉन्ग टेस्ट वाला गलत हो गया बस, और टाइम लग गया, वरना ठीक था। Tree is a connected graph without cycles. It can be shown that any tree of n verticals have exactly n minus 1 edges. ठीक है। Now, leaf is a vertex in a tree with exactly one edge connected to it. Leaf is a vertex in a tree with exactly one edge. ठीक है। Distance between two vertices u and v in tree is the minimum number of edges that must be passed to come from vertex u to v. ठीक है। Now, Alex's birthday is coming up and Timfoy would like to gift him a tree of n vertices. However, Alex is very moody boy. Uh, every day for q days, he will choose an integer denoted by an integer chosen the ith day by di. If on the ith day they are there are not two leaves in the tree at a distance exactly di, Alex will be disappointed. Emma decided to gift Alex a designer so that he can change his tree as he wants. Choose vertices u v1 v2 such that there is an edge between u and v1 and no edge between u and v2. Then remove the edge between u and v1 and add edge between u and v2. This operation cannot be performed if the graph is no longer a tree after it. Okay. This operation cannot be performed. The graph is no longer a tree after it. Okay. Somehow Timur managed to find out all the D's. After that, he has another brilliant idea. Just in case, make an instruction manual for the set one. Timur is not lazy as Alex, but when he saw the n teachers, he quickly lost the desire to develop the instruction in the original tree, so he assigned this task to you. It can be given that tree and the sequence of operations satisfying the described. First, print an n minus 1 string describing the edges of the trees. If you want the tree to have an edge between nodes u and v,
then there must be a string vu or uv among these n minus 1 lines. Okay, distances. So 1600 people have solved. I think I should solve this. It's not tough, I think. Alex birthday is coming up and would like to gift him a trio of n vertices. Whoever Alex is very moody boy. Every day for Q days, he will choose an integer denoted by an integer chosen the ith day by di. If on the ith day there is not two leaves in a tree at a distance exactly ti, Alex will be disappointed. Okay, choose vertices u, v1, v2 such that there is an edge between u and v1 and no edge between u and v2. अच्छा, u और v2 के बीच में edge नहीं होना चाहिए, u और v1 के बीच में होना चाहिए. Then remove the edge between u and v1 and add as this. आपको प्रिंट क्या करना है? ओके. The next few lines print three integers each u, v1, v2, a description of the operation. Standing. If I had done fast, I could have got like 1500, 1400 plus. I think 14. Why people are able to solve it? Or able to solve this fast today? लीक हो गया है क्या आंसर्स? पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है लीक हो गया है क्योंकि लोग तो कर पा रहे हैं सॉल्व. लगता नहीं यार अभी तो टाइम बचा भी नहीं है कि मैं ट्राई कर सकूँ इसको. पर यार इतना शायद से टफ नहीं है ये. 1700 लोगों ने कर लिया है. ये डीएसयू से होना है क्या सॉल्व? आपको क्या बोला है कि आप कोई भी रिमूव करवाए जिसमें यू और वी1 के बीच में एच ना हो. यार डीएसयू लगना है क्या? Hey player 1, do you think you're ready for this? डिसजॉइंट सेट यूनियन जिसको हम शॉर्ट में डीएसयू भी बोलते हैं, इस टॉपिक ऑपरेशंस करने रह सकते हैं. तो मैंने क्या बोला कि भाई इन दो लोगों को मिला देते हैं, फिर इन लोगों को इससे साथ मिला देते हैं, तो ये एक पूरा सेट बन गया है ना. फिर मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों को मिला दो तो ये एक सेट बन गया, ये अकेला रह गया. तो जब ये चीजों को मिलाते हैं ना हम लोगों को, या तीन चीजों को मिलाते हैं, तो ये क्या हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेट्स बना रहे हैं. ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है. जैसे कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं ग्राफ में. फंक्शन क्या करेगा, लेट्स हमने बोला मेक ऑफ वन, इसमें हम क्या रूट मेरे को देगा. ठीक है, अब मैं इसका जो चाइल्ड है ये है, और ये एक हमारा नोड है, ये चाइल्ड है, और एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है. ठीक है, तो हम उल्टा डाल देते हैं एरोस को यहाँ पे. ठीक है ना, 4 का पेरेंट 3 और 2 का पेरेंट 1 है. अब तुम देखो यहाँ पे अगर मैं फाइंड ऑपरेशन करूंगा, अब मैं यहाँ पे फाइंड ऑपरेशन करूंगा ना,
तो यहाँ पे अगर इस वाले ग्रुप में मैं फाइंड ऑफ 1 करूंगा, फाइंड ऑफ 2 करूंगा, फाइंड ऑफ 3 करूंगा या फाइंड ऑफ 4 करूंगा, वो मेरे को खुद का ही नाम दे देंगे कि फाइंड ऑफ 1 बोलेगा 1, फाइंड ऑफ 2 क्या बोलेगा 2, फाइंड ऑफ 3 क्या बोलेगा 3, क्योंकि ये अभी इंडिपेंडेंट नोड्स हैं। तो ये फाइंड फंक्शन बोलता क्या है, अपने ग्रुप का पेरेंट नोड मेरे को दो, रूट नोड मेरे को दो। तो फाइंड ऑफ 3 3 के बराबर होगा, बट जब मैं इसके ऊपर फाइंड ऑफ 2 लगाऊंगा तो मेरे को 1 मिलेगा। जब मैं इसके ऊपर फाइंड ऑफ 1 लगाऊंगा तो भी मेरे को 1 मिलेगा, क्योंकि 2 के लिए इस ग्रुप का रूट 1 है, बट 1 के लिए इस ग्रुप का रूट वो खुद ही है। तो अब यहाँ पे फाइंड ऑफ 3 भी मेरे को 3 मिलेगा, फाइंड ऑफ 4 मेरे को 4 मिलेगा। यहाँ पे सेम फाइंड ऑफ 2 1 मिला, फाइंड ऑफ 1 मेरे को 1 मिला। यहाँ पे फाइंड ऑफ 4 मेरे को अब 3 मिलेगा, और फाइंड ऑफ 3 अभी भी मेरे को 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये फाइंड ऑपरेशन करेगा कि उस ग्रुप का रूट मेरे को देगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ मेरे को यहाँ पे ना एक और ऑपरेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, यूनियन ऑफ। आप सोच रहे हो कि कर क्या रहा हूँ मैं? यार मुझे लग रहा है डीएसयू का प्रॉब्लम है। अब डीएसयू मैंने ढंग से पढ़ा नहीं है, मुझे याद नहीं है कैसे क्या करते हैं। क्या ये डीएसयू का प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? अगर यार आपको ये देखना है कि यार इसके साथ एज नहीं है और उसके साथ एज जोड़ दो, यू कैन डू दैट। आई थिंक इजी है ये क्वेश्चन। 10 मिनट है ना, अभी तो टाइम है। आप ग्राफ बना लो, डिस्टेंसेस निकाल लो हर दो के बीच में। डीआई क्या होता है? Every day from few days he will choose an integer denoted by integer chosen the day by di. On the ith day, on the ith day there are no two leaves in a tree at a distance exactly di. अच्छा, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम से हो सकता है शायद से, फ्लोइड मतलब कुछ भी समझ आ रहा है। दो के बीच में how to find a distance between any two elements. I think that's the logic we are looking for. Ah, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है। ये सोचते ये होगा शायद। All other points.
I think I can't solve it. So this is it. तो होपफुली आज आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और आप और भी अगर स्क्रीन कास्ट देखना चाहते हो ना ऐसे ही, तो प्लीज लाइक करो।